हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वप्निल डगे। वेलकम टू द मैथ्स मैनेट। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ट्रेपेजियम। दिस ट्रेपेजियम PQRS ट्रेपेजियम गिवन है PQRS and side PQ is parallel to side SR है. So side PQ is parallel to side SR and we have one more information here that AR is equal to 5AP. जो AR जो लाइन है वो 5AP 5 टाइम्स ऑफ AP है, यानी सिमिलरली AS is equal to 5 टाइम्स ऑफ AQ. AES is equal to 5 टाइम्स ऑफ AQ. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. सो लेट अस स्टार्ट. और हमें प्रूव करना है कि SR जो है SR वो 5 टाइम्स ऑफ PQ है, वो हमें प्रूव करना है. सो गिवन डेटा लिखेंगे पहले, गिवन इंफॉर्मेशन हमें लिखना पड़ेगा. सो गिवन है साइड PQ is parallel to side, this side is PQ to parallel to this side SR, and one more information given है AR is equal to AR this one AR is equal to 5 times of AP. Okay, 5 times of AP, and AS is equal to AS this one AS is equal to 5 times of AQ. ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. अभी प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है SR जो है वो 5 टाइम्स ऑफ PQ है. दिस SR इज 5 टाइम्स ऑफ PQ है, ये हमें प्रूव करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. ओके, सो प्रूफ करेंगे इसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस टू ट्रायंगल्स APQ एंड ASR. ये दो ट्रायंगल है. ये दो ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर दिखाएंगे, सिमिलरिटी टेस्ट से सिमिलर दिखाएंगे. उसके बाद हम प्रोपोर्शनल दिखाएंगे साइड्स, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा के फिर ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट इन ट्रायंगल. सो वी हैव टू ट्रायंगल्स PAQ. सो इन ट्रायंगल PAQ and RAS, ट्रायंगल RAS, ये दो ट्रायंगल है. ये दो ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल RAS. ये दो एंगल्स, देखो ये एक एंगल और ये एक एंगल वर्टिकली अपोजिट है, वो इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो दैट इज व्हाई दे आर इक्वल. सेकंड स्टेप करेंगे. अभी यहाँ पे देखना है कि ये PQ एंड SR अगर पैरेलल है तो यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है. ये QS जो है वो ट्रांसवर्सल है, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेंगे, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. सो लेट अस राइट एंगल PQA एंगल PQA will be equal to angle RSA. अभी सीक्वेंस ठीक से लिखना पड़ेगा. RSA. ओके, सो PQA एंड RSA ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. क्यों? यहाँ पे आप इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हो. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी रीजन लिख सकते हैं हम. और एक रीजन लिख सकते हैं कि PQ यहाँ पे दिया है ना, PQ इज पैरेलल टू SR दिया है, एंड ये जो QS है, QS वो है ट्रांसवर्सल. QS इज ट्रांसवर्सल. तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेगा. दैट इज व्हाई दे आर equal. Similarly, we can write this angle also. We can show these two angles also equal, but it is not required because we have already shown the two angles equal. So this much information is enough for showing these two triangles similar. So let us write, therefore triangle PAQ is similar to triangle RAS by using angle similarity test. Okay, so now we can show the corresponding side proportionality. अभी दिखाएंगे. तो corresponding sides यहाँ पे 6 पेयर्स होंगे साइड्स के, वो दिखाएंगे पहले. सो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं. हमें जिस तरीके से दिया है, मतलब सीक्वेंस से जैसे दिया है
उसी सीक्वेंस से अप्लाई करेंगे। अभी ए आर देखो, ए आर कहाँ पे है, ए आर, सो ए आर बाय ए पी लिख सकते हैं हम, ए आर, or we have to write the first triangle first, so that is why AP we can write AP. Okay, AP by AR, AP by AR, I have written this AP by AR first. After that we can write AS and AQ भी लिख सकते हैं, AS and AQ. तो AQ first triangle है, so AQ by AS. Okay, AQ by AS, and one more pair we can write, or one more ratio we can write here, that is SR. देखो यहाँ पे है SR and PQ, SR and PQ. तो PQ पहले है, PQ by SR और RES, so SR. तो ये इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportion are in proportion, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमने यहाँ पे सिमिलर शो किए, उसके बाद ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो ऑल प्रोपोर्शनल होंगे. अभी लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, अभी देखो हमें गिवन डेटा क्या है वो लिखेंगे, और प्रूफ क्या करना है, तो SR इज इक्वल टू 5PQ हमें प्रूव करना है. तो ये वाला रेशियो रिक्वायर्ड है हमें, ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेशो का रिलेशन दिया है, ये दोनों में से कोई भी एक रेशो वी कैन यूज. सो आई एम यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन AQ. देखो यहाँ पे AQ बाय AS इज इक्वल टू PQ बाय SR, राइट, PQ बाय SR. सो AQ कितना है, देखो AQ एज इट इज लिखा मैंने, AS का वैल्यू है अपने पास, AS का वैल्यू कितना है, 5AQ. सो लेट अस राइट हियर 5AQ which is equal to PQ by SR. अभी लास्ट स्टेप है, AQ will get cancel, therefore we can write this. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into SR is equal to PQ into 5, that will be 5PQ. तो यही हमें प्रूव करना था. देखो SR is equal to, देखो यहाँ SR is equal to 5PQ. so we have proved this, so hence proved. okay, तो ऐसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. Let us move towards the question number 6. So the question number 6 is we have another trapezium here. So trapezium ABCD is there. So in this trapezium we have two sides parallel. Side AB is parallel to side DC. This AB is parallel to side DC or CD, and diagonals AC and BD are intersecting in the point O. So these two diagonals are intersecting at point O, and we have the measurements here. AB is 20 here, then DC is 6, then we also have OB which is 15. Now we have to find the OD. So first of all, in this type of question we have to show the two triangles similar first. After that we can show the corresponding sides proportional, and after that we can put the values which are given in the question, we can put in that, and we can have this OD, value of OD. So let us write whatever we have given. So in the given data we have to write, in the given data we have to write this AB is side parallel with side AB. Side AB is parallel to side AB is parallel to CD or DC. Okay, CD or DC we can write. So we have another information here, or we can now we can show we have this measurements here, but that measurements will be required afterwards. So let us first show these two triangles similar. So for that purpose we can take in triangle, we have to consider two triangles first. So I am going to consider these two triangles COD, right, and AOB. Okay, so in triangle COD and triangle this one COD and AOB, and triangle AOB. So I have considered these two triangles. In the two triangles we can see here this angle and this angle. These two angles are equal because they are vertically opposite. So I'm going to write that angle COD is equal with the angle AOB.
B. So what is the reason behind it? Vertically opposite angle. Vertically opposite. So these are vertically opposite angles, that is why they are equal. Okay. So in the first step we had shown first pair of angles are equal. Now we can show the another two pairs of angles are equal, but there is no need to show all the pairs of angle equal, because we have the angle test. We can show the angle test also, but it will be time consuming, and there is no need to write extra steps. So now I'm writing the second step in this angle DCO. Angle DCO is equal with DCO is equal with BAO. Angle BAO. BAO. DCO means this angle, and A and BAO means this angle. So this angle, these two angles will be equal. So the reason behind it is they are interior, right? Interior alternate angles, right? That is why they are equal. But we can write the another reason, which is AB is parallel with the DC, and AB is parallel with the DC, and DB will be the transversal. DB is transversal. So that is why we can have these two angles equal by using the interior angle alternate angle theorem. So now we have sufficient data to show these two triangles. Triangle COD is similar to triangle AOB, right? So the reason is angle similarity test. Similarity test. Okay, so now we have done most of the part here. So now we just have to show the correspondence here, correspondence of sides. So correspondence of sides, I will show the CO. Suppose CO is CO by AO, CO by AO. After that I can show this OD by OB, and last will be CD by, right, CD by this AB. So the reason is corresponding sides are proportional, right? Proportional. So corresponding sides are proportional, that is why we have written this. Now we have to put the values here. So we have this AB here, right? AB is 20. I can write this 20 here. After that I have DC or CD, which is 6, and we have OB also. I will use this one, this combination. OB is 15, and we can write or we can find this OD by using this. We have to find this OD. So now we can easily calculate the values or simplify the values. So we will get 6 into 15 divided by 20. So 5 3s are 15, 5 4s are 20, 4 1 4, 2 2s are 4, 2 3s are, and OD will be 3 into 3 is 9 by 2. So the answer will be in the decimal format. 9 by 2 means 4.5. So we got this OD is equal to 4.5 units. Okay, so that was the question number 6. The question number 7 is rectangle or quadrilateral ABCD. This ABCD is parallelogram. Okay, so this is parallelogram, and point E, this point E is on the side BC. Okay, and line D is intersects ray AB. Line this DE is intersecting the DE is intersecting that AB in the point T. So here, and we have to prove that DE into BE is equal to C into T. So we have given data. We can write all the given data which is given here. We have to write that. Okay, so in the parallelogram, so quadrilateral ABCD is parallelogram. Okay, so this is first point which is given, ABCD is parallelogram. After that, point E
point E. Point E is on side BC. Point E, this one. Point E is on side BC. This is the another data, and last line D is intersect ray AB in point T. So we can write line DE intersects ray AB in point T. We can write all the data which is given. So we had written here all the data. Okay, so now we have to prove. To prove we लिखेंगे. To prove क्या करना है हमें? DE into BE is equal to CE into TE. हमें ये प्रूव करना है. ओके, तो कैसे करेंगे? तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ. सो इन द प्रूफ वी हैव फर्स्ट स्टेप. इस तरीके के क्वेश्चंस में सिमिलरिटी, ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी के, ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे हमें सिर्फ दो ट्रायंगल सर्च करने हैं और दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिखा के फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स हम प्रोपोर्शनल दिखा के ये कर सकते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे. तो वी हैव दिस टू ट्रायंगल. आई एम हैविंग दिस ट्रायंगल BET. सो फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल BET. ओके, एंड ये वाला ट्रायंगल है BET एंड अनदर ट्रायंगल अपने पास है CED. ओके, ट्रायंगल CED. ये दो ट्रायंगल अपने पास है. तो ये दो ट्रायंगल पहले सिमिलर दिखाएंगे. तो कैसे सिमिलर दिखाएंगे? एंगल BET, देखो ये एंगल जो BET जो एंगल है ये वाला BET एंड ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट है. तो एंगल CED ये दो एंगल इक्वल होंगे. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो वो एंगल इक्वल दिखाए. सेकेंड वन क्या कर सकते हैं? अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या होता है? ABCD इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है, इसका मतलब होगा ये जो लाइन BT है ये पैरेलल होगी CD से, राइट? AB या AT. AB इज पैरेलल टू CD है. AB इज पैरेलल टू CD है. तो ये जो AB के लाइन के ऊपर ही ये जो T पॉइंट है उन्होंने दिया है, ये पॉइंट AB के लाइन के ऊपर ही है. तो इसका मतलब हो गया है AB एंड CD पैरेलल है. तो इसका मतलब AT या BT एंड CD पैरेलल होंगे, राइट? BT एंड CD पैरेलल होंगे. इसका मतलब ये जो दो लाइन पैरेलल है और ये TD ये ट्रांसवर्सल है. सो वी कैन शो दिस एंगल, दिस एंगल. और कौन सा एक एंगल पैरेलल बने? कोई तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे. तो अगर ये एक ट्रायंगल हम एंगल कंसीडर करते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल एंड ये एंगल भी इक्वल होगा. ओके, तो लेकिन दोनों में से कोई भी एक एंगल दिखाएंगे. तो ये दिखाते हैं एंगल TBC. सो एंगल TB, देखो TBE. तो ये दिखाएंगे. ये सीक्वेंस फॉलो करना है. TBE, राइट? TBE. तो इसका मतलब ये सीक्वेंस करना पड़ेगा फॉलो. DCE, एंगल DCE. तो देखो DCE, ये दोनों एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल हमने इक्वल दिखाए. तो इसका रीजन क्या होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिख सकते हो आप. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये लिख सकते हैं. एंड वी कैन राइट वन मोर इंफॉर्मेशन हियर. AT is parallel to CD. Yeah, we can write BT is parallel to CD and DT is transversal. Okay, transversal. So अभी लास्ट स्टेप में क्या? बिफोर दिस वी हैव टू राइट द टू ट्रायंगल सिमिलर. ट्रायंगल BET इज सिमिलर टू ट्रायंगल CED. रीजन क्या? सेम रीजन आएगा. एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट. ओके, सो लास्ट स्टेप हो गया. अभी सेकंड लास्ट स्टेप. पहले अभी करस्पॉन्डेंस लिखेंगे. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है. ओके, सो प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे बोल सकते हैं. सो लिखेंगे रेशियो लिखेंगे. तो रेशियो में हमें यहाँ पे जो चाहिए वो सब आना चाहिए, आएगा वो.
BE, देखो यहाँ पे BE by CE is equal to ET, right? ET by ED and which is equal to BT, ये वाला BT by CD, ये लिख सकते हैं. इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग sides are proportional, right? Proportional corresponding sides are proportional. तो अभी लास्ट स्टेप यहाँ पे देखना है हमें कौन सा, हमें डी चाहिए, राइट? तो डी अपने पास है, डी मतलब ईडी लिखा है, बी चाहिए, यहाँ पे बी है, सी चाहिए, यहाँ पे सी है, एंड टी चाहिए मतलब यहाँ पे ईटी. सो वी हैव टू कंसीडर दिस कॉम्बिनेशन एंड देयरफॉर वी कैन राइट, यहाँ पे सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर इजीली आ जाएगा. सो ओके, सो बीई इंटू दिस ईडी या डीई, यहाँ पे जो है वो लिखेंगे. ओके, ईडी की जगह पे डीई लिखता हूं मैं, डीई विच इज इक्वल टू सीई, दिस वन सीई इंटू ईटी या टीई. ओके, सो ये हमने प्रूफ किया. तो बीई ये देखो, ये हमने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में डी पहले है तो ये चल जाता है, मतलब ये प्रोडक्ट जो आगे पीछे अगर ये वैल्यूज किए तो भी चलेगा. सो बी इंटू डी इज इक्वल टू ई सी या सी इंटू टी, ये प्रूव हो गया. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, so this was the question number 7. Let us learn how to solve the question number 8. Question number 8, in this question we have one figure. So in this figure we have this AB. So we have these two triangles here. So this is A, this is B, P, C, and this is D. So we have this figure. So in this figure, segment AC, this segment AC and the segment BD, these segments are intersected in each other in the point P. Okay, and we have given the fraction that AP by PC, yeah, CP is equal to BP by DP. It is already given, and we have to prove the triangle ABP, this triangle ABP and triangle CDP. We have to show the congruent, or we can say similar. We have to show the both triangles are similar. So it is very simple. So in this we have some information given. So now we are going to consider in triangle ABP and triangle CDP. Okay, so in both this triangle we have already AP by CP is equal to BP by DP. It is given. Okay, so we have already the two sides ratio which is also equal in the question also. So now we can write angle, we can show this angle and this angle, these both angles we can show the angles are equal by because they are vertically opposite angles. So angle APB is equal to CPD, angle CPD. Reason is they are vertically opposite angles, right? They are vertically opposite angles, due to that they are equal. So now we can directly write here triangle ABP is similar to triangle CDP. What is the reason? Reason will be side similarity test. Okay, similarity test by using this side, because we have these two sides common, or we can say that equal, these two sides AP, this one AP and CP, the ratio of that are equal. It means we can say that they are equal. And another pair of side is BP, this one BP and DP. So the angle which is APB and CPD is in between that both the sides, means side angle side. So by using this side angle side, we have shown that these two triangles are
similar. Hence we have proved that. Okay, so now we will solve the question number 9. Number 9 in this figure. So this is the A, B and C. This is the figure ABC. This is the triangle ABC. So in this triangle ABC, we have this point D here, which is in between, or we can say it is on the line BC. So in the triangle ABC, point D is on the side BC such that angle BAC, this angle BAC, this angle is equal to with the ADC. Okay, so we have given that these two angles are equal, and we have to prove CA square is equal to CB into CD. So for this, we have to show this both the triangles similar. So in triangle BAC and in triangle BAC and triangle ADC. Okay, so this is angles, right? So these are the angles. Okay, so in triangle BAC and in triangle ADC, we have the information already. One angle is equal here, so angle BAC is equal with the angle ADC. This information is given. So now I can show another triangle equal, which is C, because C angle is common in both the triangles. So angle BCA, okay, angle this BCA, and I can write ACD, okay, ACD. This both the angles are equal because they are common angles. Okay, so due to that they are equal. So I can write the, therefore triangle BAC, okay, triangle BAC is similar to triangle ADC. Okay, the reason behind it is because they are angle similarity test. Okay, so angle similarity test, due to that they are similar. And now we have to show this CA square is equal to CB into CD. So how to show that? We have to write the correspondence of the sides here, because when we show the two similar triangles, their corresponding sides are in the proportion. So I can write this BC, right? BC by this AC, BC by AC, and I can write this AC by DC. Okay, the reason is corresponding sides of triangle, corresponding sides of the similar triangles, corresponding sides of similar triangles are proportional, right? Proportional. So this is the reason. And now I can write the, I have to do the cross multiplication, BC into DC, which is equal to AC into AC. So that is AC square. So this is the we have to prove this. BC or CB into CD means BC into DC is equal to AC square. So therefore we have proved that. I hope आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है. You have to write this sequence. You can write this sequence also. Okay. So I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा. ये जो